गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। आज 13 तारीख है। ताइवान में इलेक्शंस हो गए, पर वो किसी और दिन। 15 तारीख को हमारा आर्मी डे है, और आर्मी डे से पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 2 दिन पहले एक बड़ा कॉन्फ्रेंस लिया था, जिसमें इन्होंने क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ इंडिया को आउटलाइन किया। इन्हीं चीजों के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं जनरल हसनैन सर। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट वंस अगेन। It's a pleasure to have my co-commander back on my channel. Good evening. Thank you very much. Happy New Year to all our viewers and Jai Hind. Bhai, it is always a pleasure to join Gunner Shot. Let me tell you that. मैं सबको बताना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं है, जनरल हसनैन जो है वो ज्यादा माने जाते हैं और जाने जाते हैं कि उन्होंने 15 कोर कमांड किया, और ये भी आजकल ज्यादा जाना जाते हैं क्योंकि वो ही इज इन द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और डिजास्टर मैनेजमेंट में इनका बहुत बड़ा हाथ है। पर जो चीज जो नहीं जानते हैं सब, कि ही आल्सो कमांडेड अ स्ट्राइक कोर, द स्ट्राइक कोर, सुदर्शन चक्र कोर, which is supposed to cut Pakistan into half in case it has to happen. And उस वक्त ये हमारे कोर कमांडर साहब थे, मैं इनका आर्टिलरी डिवीजन का जीओसी था। तो वी गो अ लॉन्ग वे बैक। बहुत माहिर डिवीजन कमांडर थे ये हमारे। थैंक यू सर। और ये यही नहीं, हम इससे पहले हम साथ एज कर्नल्स भी काम कर चुके हैं इन एमएस ब्रांच ऑफ इंडियन आर्मी, और हमारा पुराना रिश्ता है। तो वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग सर टुडे, बट बिफोर दैट I'd like to wish everyone a happy Lohri, a happy Makar Sankranti, a happy Pongal and a happy Bihu and all that, because today I think across India सबका कोई ना कोई त्योहार है हर घर में। Happy festive season actually. Happy festive season. Yeah. एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारा एक्चुअली न्यू ईयर है। Okay. But then what did the Chief of Army Staff say 2 days back? Which is more important? उन्होंने ये बोला है कि northern borders are stable but sensitive after 3 years of confrontation. मोटा तौर पर terrorist activities in Rajouri are an issue of concern. He's expressed concern over the situation at the IndoMyanmar border. He's also spoken very positively about induction of some new technologies, and that the army has addressed various domains of warfare through these technologies. We'll talk of it because there's a very positive development which has happened from IIT Madras. Then he's spoken of optimization of strength, Agniveer induction is progressing smoothly and all that, which is a work in progress. We need not touch on it. And then he spoke of better jointness, but not much about theaterization. और ये मोटे point थे sir. So out of these, I think the first 3 which we spoke of are very critical. We'll speak of them. In the last point, there is something which we have to look forward to, which will take it up. So I would like you to start with whichever direction you want from the north. Shankar, I think शुरुआत हम करते हैं नॉर्दर्न बॉर्डर्स से। मगर उससे पहले मैं बता दूं कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स आजकल बड़े फ्रीजिंग कंडीशन में है, और तभी मैं इस तरह की टोपी पहनकर और स्कार्फ पहनकर आपके साथ आज प्रोग्राम में शामिल हो रहा हूं, इसको सिंबलाइज करने के लिए कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स की तरफ हमारा फोकस बहुत होता है और होना चाहिए। साथ में मैं मुबारकबाद देता हूं अपने आर्मी चीफ साहब को। इस साल की मीडिया कॉन्फ्रेंस कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, मैं समझता हूं। उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत की, सवाल भी बड़े अच्छे आए थे, और साथ ही एक चीज खास तौर पे थी कि उन्होंने बहुत चीजें एडमिट की, फॉल्ट्स एडमिट की अपनी, खास तौर पर रजौरी के बारे में, इंडो म्यांमार बॉर्डर के बारे में, जो आम तौर पे नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आप देखें तो आर्मी चीफ को तो छोड़िए और कोई एडमिट नहीं करता है आसानी से। मगर मेरा तजुर्बा यह है कि अगर आप पब्लिकली एडमिट करिए कि ये हमारी कमजोरी है, तो अपने आप पर एक भार आता है
जिससे एक जवाबदारी आती है, जिससे कि यू देन ट्राई एंड ओवरकम दैट प्रॉब्लम। और मैं समझता हूं कि बड़े कूलली उन्होंने ये सब सवाल इस दफे लिए। जहां तक नॉर्दर्न बॉर्डर्स है, बेसिकली लद्दाख, हमारी इस वक्त लद्दाख सेंट्रिक ज्यादा है, उत्तराखंड लद्दाख ज्यादा सेंट्रिक ज्यादा हमारी अप्रोच है। और 2020 अप्रैल मई 2020 के बाद, उसके बाद गलवान 15-16 जून गलवान के इंसिडेंट के बाद एक फ्रीज तरीका का आ गया था इस पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। 50-60 हजार ट्रूप्स दोनों साइड ने वहां पर लगा दिए थे एक मिरर डिप्लॉयमेंट के तौर पे। और तब से उसी स्थिति में, स्टैटिक इन दैट सिचुएशन, वी हैव बीन स्टक देयर। कुछ ऊपर नीचे हुआ है लद्दाख में, खास तौर पे देयर बीन अ लिटिल बिट ऑफ गिव एंड टेक। 19 दफे या 20 दफे शायद कोर कमांडर्स मिले हैं, कुछ इंप्लीमेंटेशन हुआ है ऑन ग्राउंड, बट नॉट मच हैज चेंज्ड। मेरा देखना इसका इस तरीके से है कि चाइना ने, देखिए चीन ने आपको एक दफे कोवर्स किया है, कोर्शन करने की कोशिश की है। जरूरी नहीं कि आप कोर्स हुए हैं, आपने भी जवाब में उनके डिप्लॉयमेंट वहां पर उस तरह का किया है और डेमोन्स्ट्रेट किया है, ना कि चीन को, पूरी दुनिया को, कि भारत जो है वो कमजोर नहीं है किसी तरीके से। और हमने प्रोजेक्शन किया है कि वी आर केपेबल ऑफ डिफेंडिंग आवर इंटरेस्ट कंप्लीटली। इस वक्त मैं समझता हूं ज्यादा बदलेगा नहीं। ये साल 2024 ऐसा है, 25 शायद वो भी ऐसा हो, जबकि थिंग्स आर मूविंग स्लोली इंटरनेशनली। जब तक जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट और सिचुएशन बदलेगी नहीं ज्यादा, तब तक मैं नहीं समझता हूं कोई बदलाव आएगा इस इलाके में। तो ये स्थिति जो है, इस तरह की जो है, आईबॉल टू आईबॉल, LAC कन्वर्टेड टू LOC जो है, तकरीबन चलती रहेगी। क्योंकि इजराइल हमास वॉर की तरफ बहुत फोकस है, वहां यूक्रेन की वॉर के ऊपर बहुत फोकस है। कोई किसी चीज को बिगाड़ना नहीं चाहता, चीन नहीं बिगाड़ना चाहेगा इस वक्त। और मैं समझता हूं देखो ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुन मोमेंट है जब भारत को पूरी तैयारी करनी चाहिए। वी शुड स्ट्रेंथन आवरसेल्व्स टू द हिल्ट टू मेक श्योर कि हम इतनी ताकतवर हम बन जाएं कि चीन जो है 2 दफे 3 दफे 10 दफे सोचे कि इससे पहले कि वो कोई आंख दिखा सकता है भारत को। सर, जो आपने बोला वो बिल्कुल सही बोला है, बट आई विल ड्रॉ योर अटेंशन कि उन्होंने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला, वेयर द सिचुएशन इज स्टेबल इट इज ऑल्सो सेंसिटिव। लेट मी हाईलाइट इट। अभी अगर आप देखेंगे तो चाइना का हालत, अंदरूनी हालत प्रॉब्लम में है, और वो अभी तक ताइवान को मिलिटरली वो पकड़ नहीं सकते, बिल्कुल उनका तैयारी नहीं है, ये सबको पता है। और एक और तरीक ये है कि वो फिलीपींस में भी कुछ फेस ऑफ्स हो रहे हैं इन साउथ चाइना सी। इस हालत में he is not able to make headway there. Will he attempt something small here? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा, right? The point is, why will he do something? Let me explain, and I would like your thinking on this. क्योंकि अगर कुछ छोटा मोटा पत्थर भी कब्जा कर ले हमारा साइड ऑफ द LAC, तो he can impose reputational costs on us, कि हमारा जो ये नेशन है, ये ग्लोबल पावर बनना चाहता है, राइज करना चाहता है, देखिए थोड़ा बहुत डिफेंड नहीं कर सकते हम, जहां हमें चाहिए कुछ हम कर सकते हैं। So is there a chance? I think when the chief of army staff spoke of sensitivity, I think this is what he was probably hinting at. Your views? He was definitely alluding to this. There's no doubt about it. जब देखिए, जब दो फौजें अगर मुद्दतों से लगी हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम, इफ दे हैव बीन ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, आई टू आई, आईबॉल टू आईबॉल, वो जो स्पार्क के साथ वो एकदम से भड़कपन नहीं आता है। मगर ये जो LAC में हो रहा है इस वक्त, दिस इज द न्यू सिचुएशन व्हिच केम अबाउट इन 2020 एज वी आर अवेयर। 3-4 साल हुए हैं जिसमें भारत और चीन जो है दोनों अब आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट में है, खासतौर पर लद्दाख में जिस तरह से अभी डिप्लॉयमेंट है। मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि चीन के अंदर अंदरूनी हालत जो है जरा अनस्टेबल सी है इस वक्त,
और उसका जो इंटेंट है, ओवरऑल इंटेंट है ऑफ पावर प्रोजेक्शन एक्सेट्रा, वो नहीं हो पा रहा है। यहां तक कि आप देखें कि उसके एफर्ट्स जो मिडिल ईस्ट में भी हुए थे, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में रैप्रोचमेंट लाने के लिए, वो भी तो कुछ हद तक उसके ऊपर भी पानी फिर रहा है इस वक्त। तो चाइना इज फीलिंग अ लिटिल पीव्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। क्या ये जो चीज के ऊपर जिस तरह से वो पीव हो रहा है, क्या वो ट्रांसलेट हो जाएगा इनटू अ स्मॉल स्केल टैक्टिकल मिसएडवेंचर on the line of actual control to draw attention, to gain some brownie points for the internal situation within China, also to take away attention from some other parts of the world? क्या ये हो सकता है? एक्सीडेंटली तो बेशक हो सकता है। एक्सीडेंटली तो कोई भी चीज जो है, व्हेन यू आर एन आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट, कोई भी चीज हो सकती है। डेलिबरेटली की बात है। अब डेलिबरेटली की जब बात हम करते हैं तो इसमें हमें डिबेट करना पड़ेगा, क्या चाइना देख रहा है दो लड़ाइयां जो चल रही हैं दुनिया में इस वक्त, यूक्रेन में रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, जहां रशिया की का पावर, ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को देखकर कोई हेडवे इतना ज्यादा नहीं बन पाया है। हालांकि ये डिबेटेबल है कि क्या स्थिति एक्चुअली है, मगर वो हेडवे जो वो सोच रहे थे वो नहीं बन पाया है। इजराइल हमास वॉर के अंदर सब सोच रहे थे कि इजराइल जो है वो 3.5 लाख ट्रूप्स को मोबिलाइज करने के बाद चढ़ जाएगा गाजा स्ट्रिप के ऊपर और उसका तबाह कर देगा उसको पूरा। वो भी नहीं हो पाया है। टैक्टिकल विक्ट्री टू स्ट्रेटेजिक विक्ट्री दोनों जगहों पर नहीं हो पाई है। क्या इसके कोई लेसन्स वो लर्न कर रहा है चीन? मैं समझता हूं कि चीन भी कुछ हद तक, चाइना हैज गॉट अ इंटेलेक्चुअल capacity to study all these wars and conflicts around the world at any time. नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में उनके पूरे वक्त ये स्टडीज एनालिसिस होती रहती हैं, तो उसके लेसन्स वो जरूर सीखेगा। मगर आई थिंक जो आपका पॉइंट है बिल्कुल सही है, और आर्मी चीफ ने भी जो समझा है वो भी सही है कि देखिए, ऐसी स्थिति में 2020 में भी जब पैंडेमिक आया था और दुनिया की उंगलियां उठ रही थी चीन के ऊपर, तो चीन ने वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करके कुछ जगहों पर, हांगकांग में, ऑस्ट्रेलिया के साथ और खास तौर पे इंडिया के ऊपर हावी होने की कोशिश की थी। Did they succeed completely? That's a thing, separate issue which we can discuss. मगर अगर उस हालत को देखें तो चीन दोबारा बेशक वो कर सकता है, एंड वी शुड नॉट रूल इट आउट, डेफिनेटली नॉट रूल इट आउट। तो इसलिए 50-60 हजार ट्रूप्स जिस तरह से डिप्लॉयड हैं इस वक्त, वैसे लगे रहने चाहिए। मगर वी शुड बी वेरी सेंसिटिव। मैं समझता हूं कि हमारे जो ऑपरेशनल और टैक्टिकल लेवल कमांडर्स हैं, उनको उनके ब्रीफ बहुत क्लियर होने चाहिए। दिस इज द टाइम व्हेन वी डू नॉट वांट unnecessary tensions on the border, and converting of something which is very very sub tactical to something strategic must not happen overnight. ये basic precautions हमको लेने चाहिए। That does not mean that India is afraid, but India is not looking for problems. Our aim is very clear. We are a $3.7 trillion economy today. We are looking at $5 and $10 trillion economy and beyond. We are looking at 2047. The national aim is very clear. We need not get stuck, need not get ourselves stuck in these tactical battles at any time in the near future. Yeah, I think so, sir. I also think so. And if we do get into something like this, our reaction should be so that, like what happened in Yangtze, we gave the solid, nice beating to the Chinese and sent them back. And what I want to convey, and I think you could also reinforce it, is being defensive doesn't mean that you're not aggressive. Absolutely. Right? And that you can't do what you're supposed to do. And I think we need to convey a lot of aggression through our defensive tactics overall, and take away all the sensitivity of this equation out of the story. आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट दिया इसका, कि your desire to keep your border stable and peaceful does not translate into anything defensive. Defensive जरूर आप, मतलब you got a strong defensive posture which should be there, but your approach cannot be defensive. आपको पूरे वक्त ये रखना पड़ेगा, देखिए we are we are huge large nations.
You are a larger nation today, there's no doubt about it. There's an asymmetric situation between us in terms of our economies and overall capability, right? But respect the fact that India is rising, and we don't think that India will take anything lying down as far as its pride, honor and pride as a nation is concerned. I think ये आज के भारत पे में ये चीज खास तौर पे इसके ऊपर बहुत फोकस और बहुत एम्फेसिस है, and we should learn how to translate that political idea into a military idea, Military because idea. Yeah, I think, नीचे के लेवल पे इसको समझने की जरूरत है बहुत ज्यादा. yeah. So with this, let's turn to the West and we'll talk about Pakistan. One thing which was जो हमारा chief ने, he was quite silent on the Pakistan capability. Not too much he spoke, but he did say कि Rajouri और Punch के बारे में he expressed concern. So how do you assess that situation on our Western front? देखिए Jan Shankar, we have done a whole program on this once, and we Yeah, have we have done done. a lot We of have. things together on this. I think much of what the chief spoke, actually we have discussed it even at that time, and I've written extensively about it in lots of national print media. I don't think there's much of a difference between what he spoke and what we perceive and what we feel. What I liked about it was the fact that he stated, first of all, that it is Pakistan which is trying to make a comeback and is trying to make its relevance felt all over again. This is exactly what we spoke. We said it's attempting to try and make a comeback. It's not finding the situation very conducive in the valley at the moment. Deployment bhi aisa hai. Attitude of the locals has also changed very greatly after 5th of August and progressively after 5th of August 2019. मगर ये जो बेल्ट है पीर पंजाल की, ये बड़ी terrain wise, cover wise, demography and ethnicity wise, etc., it somehow is offering an opportunity to Pakistan. Perhaps a huge amount of money has come in or whatever it is, but efforts at infiltration probably have succeeded, and high quality terrorists, well trained terrorists, who I personally feel are really not terrorists, who are acting terrorists, essentially regulars of the Pakistan army who have come in here. What they are attempting to do is कि basically अपनी relevance दिखाना, पाकिस्तान की relevance दोबारा बनाना. नहीं तो 32 साल का जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ने किया है उस पर पानी फिर जाएगा. ये बेसिकली है मैसेज जो जा रहा है इस तरह की एक्टिविटीज के साथ. हम क्यों सक्सेसफुल नहीं है इसको काउंटर करने में? मैं समझता हूं कि ये सब पॉइंट तो ठीक है कि थोड़ा रीडिप्लॉयमेंट हो गया है, कुछ लोग लद्दाख बॉर्डर पे कुछ फॉर्मेशंस चले गए एक्सेट्रा. दिस इज नॉट सफिशिएंट रीजन. आई थिंक जो उन्होंने सही कहा और एडमिट भी किया कि वी हैव टू रीथिंक एंड रिव्यू lots of procedures, ideas, deployments, etc. That is absolutely correct. मैं समझता हूं कि ऐसा कोई solution नहीं है जो हमें कहीं से ढूंढ कर निकाल के लाना है. All solutions are within the army. आर्मी को मालूम है, उनको तजुर्बा है, वो अगर छानबीन करे पिछले 32 साल की, उनको फेज वाइज दिखेगा कि कहां पर उन्होंने क्या किया था और क्या चीज बिल्कुल सही की थी. उसी से निकलकर आएंगे इसके सॉल्यूशन. अभी एक नई कमांड स्ट्रक्चर, अभी न्यू कमांड हैज टेकन ओवर इन द सेंस वी हैव अ न्यू कोर कमांडर जनरल सचदेवा हु इज फ्रॉम माय यूनिट हिमसेल्फ, एंड आई थिंक दिस इज अ टाइम टू रिव्यू द बेसिक प्रोसीजर्स. और मैं समझता हूं जो मैं हर दफे दुनिया में याद रखा है मैंने, मे बी मोर फ्रॉम द मैकेनाइज्ड फोर्सेस डेज, इज अ इशू कॉल्ड बैक टू बेसिक्स. आप अगर अपने बेसिक्स को नहीं भूलें, आपको बताया है कि 3 गाड़ी का कॉन्वॉय जाएगा, क्यूआरटी जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन व्हीकल्स विल बी एटलीस्ट 100 मीटर्स. उसके अंदर किस तरह से आपके पास हथियार होंगे, किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या ड्रिल्स होंगी. मैं इंडियन आर्मी को बेसिक ड्रिल्स नहीं सिखा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं सिर्फ आर्मी को कि आप ही के अंदर ये सोल्यूशन है, किसी को बाहर से लाने की जरूरत नहीं है इसको आपको समझाने के लिए. एंड देयरफॉर that is what you have to review, and that is what you have to return to. I think that's a fair thing, sir. आपने जो बोला है, we have discussed this, and it's an iteration of what is happening and what will happen ahead. Now, one point which I'd like to say, आपने
बोला, and which chief said, chief said the attitude of people of J&K is changing. Just today, I heard the GOC in Northern Command speaking to Nitin Gokhale. There also, the first opening talk of this, or the opening part of the dialogue, was about the attitude of the people of J&K, and he gave it examples also. So, what is one thing which has come out from both the GOC Northern Command and the chief is that they're very conscious of the fact that the attitude of the people has changed. They're also very conscious of the fact that the issue in Rajouri and Punch and that belt is a matter of concern. In fact, if you remember, even the GOC Northern Command, उन्होंने भी बोला इस बारे में, और मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कि वो सही कदम ले रहे हैं जिससे ये बात हल जाएगा. So I think we are in a fairly good position, and I think we are in a fairly. मैं एक चीज सिर्फ इसमें ऐड करूंगा आपके ये कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा और जाकर जो मैसेज दिया, ये कभी कभी हम भूल जाते हैं फौज के अंदर जब हम एंथुजियाज्म में आ जाते हैं, when we are seeking an operational success etc. आप अपनी हथबंदियां रखिए. This aspect of going to the people, winning hearts and minds cannot be forgotten. This is a basic doctrine जो इंडियन आर्मी ने मुद्दतों से फॉलो की है. I think ever since we've entered into Nagaland in 1956 or so, we have always followed this. This became formalized in 1997 with Operation Sadbhavna. आपने बड़ा जबरदस्त काम किया है हफलॉन्ग में, मुझे मालूम है. No, in Lower Assam and those areas. तो winning hearts and minds is something, you see, incidents हुए और उस इंसिडेंट्स के अंदर आप जितनी गुडविल आपकी पैदा हुई है इतने सालों से उसको आप खो दें because of some unnecessary tactical actions. That is something which we have to bring it down to the commanders. कि आप इसको नहीं भूल सकते हैं कि the people at the center of gravity of this situation here, and we need to always keep that in mind. कभी कभी हम tactical level पे कभी ये चीजें भूल जाते हैं. I think that's a fair thing, sir. And I think overall, अगर आप देखेंगे, तो the Indian Army is in a good situation to ensure not only peace, also successful conduct of the elections as and when they happen. Because that's time bound, that has to happen by September as per Supreme Court ruling. I think everyone is aware of it, and I think people are working to that. So we'll leave J&K at that. We'll take the third point which he mentioned, which is, he expressed concern over the situation at the Indo-Myanmar border, and to that extent, Manipur and Mizoram also get included. So, Ved, how do you look at that whole scenario, sir? देखिए, अमित जी साहब ने इसके ऊपर काफी टिप्पणी की है और उन्होंने दो पहलू इसके रखे. एक तो इंटरनल सिचुएशन जो मणिपुर में है, जिसमें खासतौर पर उन्होंने उसके ऊपर बड़ा एम्फेसिस किया कि जो हथियार खोए गए थे, जो सिविल पुलिस के आर्मरी से लूटे गए थे हथियार, तकरीबन 5,000 हथियार से ज्यादा जो लूटे गए थे, उसके 30% हथियार भी अभी तक रिकवर नहीं हुए. तो मतलब वेपन्स आर इन द एनवायरनमेंट, नॉट टू से दैट वेपन्स इज द ओनली थिंग. वेपन्स तो म्यांमार बॉर्डर से भी आ सकते हैं और आ भी रहे हैं इस तरह से. मगर overall, he did allude to the fact that this is a very, very sensitive matter. The Assam Rifles, 46 units, perhaps insufficient to handle this kind of a thing. 20 units are at the moment on the border guarding role, the border sealing role as such. Balance of the units are in CI or CT operations, whatever one wants to call it. But I think the Assam Rifles makes a major difference here. You have worked extensively with the Assam Rifles. Yes. आप तो जानते हैं कि उनकी काबिलियत बहुत ज्यादा है. और जो लोग नहीं जानते असम राइफल्स को, याद रखिए असम राइफल्स का काडर अपना काडर है, उनके जवान का काडर जो है, और ऑफिसर्स का भी कुछ हद तक उनका छोटा एक ऑफिसर काडर भी होता है. मगर ज्यादातर मैनिंग जो है और उसके जो कमांड एलिमेंट्स होते हैं वो रेगुलर इंडियन आर्मी से आते हैं. तो इसलिए असम राइफल्स का एक बड़ा मिलिट्री ओरिएंटेशन होता है. जो जब वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करते हैं इस तरीके, दे डू इट विद अ कंप्लीट मिलिट्री ओरिएंटेशन.
which is I'm not saying anyone else does not do it with a military orientation, but वो खास तौर पे करते हैं. So more and more Assam Rifles units, if they are there, they can make a huge difference. And this is where I feel this is a time when we need to look at, perhaps if there are forces, units being raised in different forces, this is the time to look at the Northeast and say, perhaps the time has come and we need to have some more Assam Rifle units to be raised for this particular purpose. Second thing is about the border. अब बॉर्डर के थ्रू आप हमको सबको मालूम है कि क्या हो रहा है म्यांमार में. हमको मालूम है कि इंटरनल स्टेबिलिटी वहां क्या है. दिस अ वर्चुअल सिविल वॉर. वहां से 400-450 उनके खुद के लोग, खुद के आर्मी वाले जो हैं, वो वहां से भागकर हमारे बॉर्डर्स के अंदर आ गए हैं. सुना है कि अब सब वापस चले गए हैं, मगर ऑल द टाइम दिस इज हैपनिंग एंड दिस एड्स टू द कंफ्यूजन. ये ज्यादा सिचुएशन को और सेंसिटिव बनाता है. ना ही आप अब इंटरनल सिचुएशन देख रहे हैं, आप बॉर्डर को देख रहे हैं और बॉर्डर के उस पार भी देख रहे हैं. तीनों चीजों को देख रहे हैं. दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट कॉल फॉर लोकल कमांडर्स ऑन द स्पॉट. आई सल्यूट the IGS, IGS South और DG Assam Rifles, GOC3 कोर, ये जितने वहां पर काम कर रहे हैं इस तरह से, मैं समझता हूँ जितनी चुनौतियां ये फेस कर रहे हैं पूरे भारत में कोई शायद नहीं इस वक्त फेस कर रहा है. दूसरा, ये फ्री मूवमेंट जो रेजीम है FMR, दिस इज बीन स्पोकन अबाउट. चीफ ने भी बात की है इसके ऊपर. ये 16 किलोमीटर का जो एरिया होता है जिसमें आपको पासपोर्ट, वीजा की जरूरत नहीं है, and people can move freely across the borders on with basic permits. इसकी वजह से एक पोरोसिटी होती है बॉर्डर की, और उसके वजह से जब प्रेशर यहां से पड़ता है इनके ऊपर, लोगों के ऊपर, द एंटी नेशनल एलिमेंट्स वो उस तरफ भागते हैं. जो उधर नहीं प्रेशर पड़ता है तो इधर भागते हैं. साथ में लॉट्स ऑफ स्मगलिंग टेक्स प्लेस, लॉट्स ऑफ कॉन्ट्राबैंड कम्स इन हियर एंड देयर. तो आप अगर देखिए मणिपुर का जो उसकी जो स्थिति है इस वक्त, हर पहलू से नेगेटिव है, हर पहलू से नेगेटिव है. और मैं नहीं समझता हूं इलेक्शंस तक इस स्थिति को बदलने में कुछ ज्यादा एफर्ट्स लग पाएंगी, क्योंकि यू नो वी अंडरस्टैंड इन अ डेमोक्रेसी कि ये प्रॉब्लम्स होंगे जब इलेक्शन की पीरियड आता है. बट आई होप कि इस साल में, इस इलेक्शंस के बाद, दिस इशू विल बी टेकन बाय द थ्रोट एंड वी नीड टू एड्रेस. इस पूरी चीज को एड्रेस करना पड़ेगा. I agree with you completely. The army chief is very correctly. He has given his full concern for this area. I completely agree with you, sir. And यहाँ भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप, if you went back 3-4 months back, there were a lot of questions raised on the Assam Rifles. उंगलियां उठी Assam Rifles के ऊपर कि वो एक पक्ष में हैं और they're not balanced, they're not all that. But अगर बाद में जो हुए हैं वहाँ एक्शन हुआ है, you see that the Assam Rifles has actually come, shown to people that it is for the people of Manipur, not for a particular tribe or not for a community or not for an ethnic caste or creed. That, I think Assam Rifle has done a fantastic job. Though the chief didn't mention it in that manner, but implicit in the whole thing was that Army and Assam Rifles, when given a task, do it to the best of their capability in the best interest of the nation. I think that covered a whole lot of things. And we also have to understand, like you said, the situation is still unstable to a large degree because every second day, अगर आप newspaper खोलोगे, तो ये पता चलता है कि ये मणिपुर पुलिस एक जगह कहीं गया, वहाँ ambush हो गया. Or militants, we don't know which side the militants are, but they're, firing. And Manipur में आपने ये बोला कि इंटरनल प्रॉब्लम है, ऑन द बॉर्डर पोरोसिटी का प्रॉब्लम है, उस पार भी प्रॉब्लम है, 3 तरीका का प्रॉब्लम है. आई लाइक टू ऐड वन मोर, क्योंकि वहां का ड्रग्स का प्रॉब्लम है. अगर आप विश्लेषण करोगे तो द रेबल वॉर इज ऑल अबाउट ड्रग्स, and it is all the drug economy, which is almost close to $25 billion. People are actually fighting a tough battle. And as late as today morning, I read a news article which says China is mediating between the junta and the rebels to come to peace. So they are actually right. So there is a problem, and the problem is actually not on our side. The problem is on Shan State, which is on the other side. That is why China has got actively involved. But spillover तो होगा ही. तो ये problems I think will continue.
and we have to be just alert to handle the situation properly. Absolutely. Yeah. So we'll leave that, sir. I think we are in the situation. अगर आप देखेंगे सब कि either in the northern border or on our western border or along in Rajouri Punch areas which is sensitive or along the Indo-Myanmar border, Indian Army is under complete control of the situation. Which, sir, अगर आप देखो 5-6 साल या 10 साल पहले जब हम कर्नल ब्रिगेडियर थे और तब से अभी का स्थिति कितना बदल गया है एंड बिल्कुल, देयर इज नो डाउट. मैंने खुद 15 कोर एंड को कमांड किया एट द हाइट ऑफ टेंशंस यू सॉ एट दैट टाइम. या I still remember commanding 19 Div and yes, an active infiltration going on all the time. पीछे हमारे stone throwing शुरू हो गई थी उन दोनों में and that was taking up all our time. So compared to those times, आजकल तो बहुत stable. मैं समझता हूँ borders भी बहुत stable है और internally also there is a lot of stability. internally भी we are quite stable. So now the army chief spoke of technology also, and a lot of technological improvements are happening. One thing which he spoke, actually it gladdened my heart. मैं आपसे share करना चाहता हूँ और सबसे share करना चाहता हूँ. He spoke of a mobile system specially tailored for the army being introduced. And I'd like to say that this is probably the first time a full system is being, inducted into the armed forces, completely designed and developed by IIT Madras academia. And this will only grow. And I think this is a very positive development technologically because your homegrown technology is now being inducted into the system. And I think more and more, as we are facing an AI revolution, we're also facing a social media revolution. So technology of this nature, which is tomorrow's, where there's going to be a whole lot of narrative wars and information wars, I think we need to be a little more focused on Atmanirbharta and how to exploit such small things into big events of induction of technology. Let me endorse Yeah, what you're saying. I want to add my voice to that. जहां तक आईआईटी मद्रास का सवाल है, मुझे मालूम है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में जब भी हमें कोई टेक्नोलॉजिकल इशू की चैलेंज आती है, we always like to go back to IIT Madras. And you'll be surprised on all kinds of things. Earthquakes के ऊपर, for example. अब IIT Madras and Chennai not even in the earthquake zone. मगर जिस तरह का रिसर्च वहां पर है, जिस तरह की रिसर्च की काबिलियत वहां पर है, वो बहुत कम जगहों पर है. आई वुड से द आईआईटी कल्चर एंड आईआईटी नेटवर्क्स के अंदर बहुत चीजें होती हैं, पर आईआईटी मद्रास के साथ हमारा बहुत ज्यादा काम होता है. And that is what gladdens my heart, because I feel that every time we go back to them with a challenge, they have always got solutions. कोई ना कोई solution के साथ वो जरूर आते हैं. So I fully endorse your sentiments. so this is something which is very positive because for the first time we are using our homegrown technology for a complete induction as a system into the army. And for all those people who believe that the Indian Army technology induction nahi hota, we are behind the curve, I think it settles a lot of things, and it's a harbinger of things to come. And I can assure you that at least from IIT Madras, we're going to do many more things going ahead. But we leave that. So we're going to talk of the last issue. The chief spoke of jointness quite a bit with other services. He was a little subdued on theaterization. Fine, things are going well. But मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ. It's not only सवाल, it's some kind of a thought process which ये मेरे दिमाग में चल रहा है. हम बहुत सालों से we've been speaking of 2.5 front war. अगर आप देखेंगे तो ये जो हाफ फ्रंट है थोड़ा कम हो गया. इसमें दो राय नहीं है because like you keep saying, J&K is almost in the terminal phase of insurgency, that cycle. Pakistan, what it can do what it wants. Even in the northeast, it's more political than insurgency. So, and spillover from Myanmar. So that also is under control from earlier. And to a large extent, the two fronts we thought were LC and LOC oriented.
in the mountains. The collusivity will come between China and Pakistan on the mountains. But मेरा ये अंदाज ये है कि ये शिफ्ट हो रहा है. क्यों? अगर आप देखेंगे पाकिस्तान, लेट्स फोकस ऑन पाकिस्तान. पाकिस्तान जो है पिछले 5-6 महीने जब से ये नया चीफ आया है, it's been carrying out exercises with a lot of countries like Turkey, China, Russia, Iran, and all these countries. These exercises have been in air, land forces, significantly in the sea, especially North Arabian Ocean. And the navies are taking part in this exercises. और तो और हम सोचते रहते हैं कि पाकिस्तान का इकोनॉमी खत्म हो गया वगैरह वगैरह वगैरह, कि इट इज नो मोर अ कन्वेंशनल थ्रेट. बट अगर इनका वेपन एक्विजिशन अगर हम देखेंगे तो वो उसमें कोई रुकावट नहीं है. इनफैक्ट रुकावट नहीं, बढ़ गया है. दे आर गोइंग इन फॉर टैंक्स, चाइनीज टैंक्स. दे इन फॉर चाइनीज एयरक्राफ्ट. टुडे आई रेड दे गोइंग इन फॉर इटालियन एयर डिफेंस सिस्टम्स. And of course, their navy is almost Chinese equipped. So, अगर आप देखेंगे तो उनका जो conventional capability has not reduced. It has probably increased. And earlier, the land-centric approach of Pakistan is now shifting to, a wider domain, more domains than to encompass land, air, and sea. Do you think it's time for us to reframe or rephrase or reorient this 2.5 front story? Wow, this is a very good. I'm glad you're asking me this question. कि मेरे दिमाग में तो खलबली रहती है हर वक्त, थिंकिंग अबाउट दिस ऑल द टाइम. और मैं सोचता हूं कि बहुत दफे हम शायद अप्रिशिएट नहीं करते हैं अपने दुश्मनों को, कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं. Sometimes it's good to appreciate your adversary and understand that he too is thinking. आप में सिर्फ खुदा ने सिर्फ हमको नहीं दिमाग दिया है सोचने का दिमाग जो है वो उसको भी दिया है. And he is thinking. एक तो he is smaller than us, he is weaker than us, his economy is much smaller. There is an asymmetric situation between Pakistan and India. जब वो एसिमेट्रिक सिचुएशन होती है तो जो छोटा होता है वो ही आउटपेसेस द सुपीरियर नेशन इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग. अगर आप देखें, हिस्टोरिकली देखें अगर आप, तो जो 89 में उन्होंने शुरू किया प्रॉक्सी वॉर, हमने इसके बारे में सोचा भी नहीं था उस टाइम. कभी हमारी थिंकिंग कन्वेंशनल थी. लड़ाई होगी, पार की लड़ाई होगी, टैंकों की होगी, गनों की होगी. ये कभी नहीं सोचा था कि इस तरह हुआ ही नहीं. हजारों टेररिस्ट भेजकर इस तरह से 32 साल से हमें पैरालाइज करके रखा हुआ था वहां पर इस तरीके से. सो यू हैव टू गिव हिम हिज ड्यू एंड अंडरस्टैंड दैट ही इज थिंकिंग ऑल द टाइम. बाजवा वाज अ थिंकर. आई होप जन बाजवा हियर्स व्हाट आई एम सेइंग. ही वाज अ थिंकर. उन्होंने 2-3 दफे इस्लामाबाद डायलॉग में भी बोला, बताया कि देखो अल्टीमेटली द फ्यूचर लाइज इन पीस विद इंडिया. ठीक है. नो वन somehow took it too seriously, I think. Although at the moment Asim Munir, I think, who has so far really not shown his colors. We haven't seen him strategically so far. नहीं देखा हमने. उन्होंने कोई खास ऐसे कोई जबरदस्त चीजें नहीं बात की हैं किसी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जाकर, इधर उधर जाकर. मगर ऑब्वियसली कोई एक सोच विचार हो रहा है, चल रहा है वहां पर, और उनके एक्शन से ये काफी साबित हो जाता है दैट देयर इज अ चेंज टेकिंग प्लेस. दुनिया में चेंज हो रहा है. ऑब्वियसली वी शुड एक्सपेक्ट कि हमारे एडवर्सरीज के अंदर भी चेंज होगा. ये 2.5 फ्रंट बिजनेस जो है अब तक चल सकता था. अब जो है शायद इसकी जो अहमियत है विल प्रोबेबली स्टार्ट डाइल्यूटिंग. एंड यू विल सी पाकिस्तान, एंड यू आर वेरी करेक्ट इन योर ऑब्जर्वेशन, जिस तरह से उनकी एक्टिविटीज चल रही है. इट सीम्स के दुनिया में और किसी चीज के लिए पैसा नहीं है उनके पास, मगर डिफेंस के लिए है, एक्विजिशंस के लिए है, ट्रेनिंग के लिए है. इन चीजों के ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है.
ठीक, क्या कोई पैरेलल ड्रग इकोनॉमी चलाई हुई है, कोई और क्या चलाया हुआ है, कहां से पैसा आता है, दिस आई कैन नॉट फैथम समहाउ, मगर वो चला रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम में एक बहुत कन्वेंशनल सोच विचार होता है कि पाकिस्तान और सो देश जो हैं दुश्मन हैं, इनके इनके रिलेशनशिप भी नहीं है, इनकी एम्बेसी भी नहीं है वहां पर, तो इनके साथ इनकी कोई रिलेशनशिप नहीं होगी। मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान की इजराइल के साथ बहुत मजबूत रिलेशनशिप है। मैं गया हूं इजराइल और वहां मैंने देखा है कि टेल अवीव यूनिवर्सिटी में ज्यादा स्टूडेंट पाकिस्तान के हैं बनिस्बत भारत के। ठीक है, सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर आउट ऑफ ग्लेयर, किसी के फोकस में नहीं आती हैं ये चीजें। सो what you are actually initiating is a very fine thought process कि देखो पाकिस्तान can actually punch much above his weight if it wishes to through collaboration. It can collaborate with a lot of nations. You must not forget Pakistan's basic desire, flag bearer of the Islamic community, the Islamic world. पूरे उम्मा का they think that they are the flag bearers finally. क्योंकि इकोनॉमी नहीं थी उनके पास, तो उसके वजह से थोड़ा उनको पीछे हटना पड़ा। अगर कल 10 साल 15 साल 20 साल के अंदर इकोनॉमिकली पाकिस्तान कैन रिवाइव, सिमेट्री भारत के साथ तो रहेगी, मगर इफ दे कैन रिवाइव टू अ हायर लेवल्स ऑफ इकोनॉमी, यू कैन इमेजिन व्हाट पाकिस्तान कैपेबिलिटी विल बी। So we should be looking at this entire thing quite differently. When we do this thought process, खुले दिल के साथ, खुले मन के साथ, academically, you should not be a purely internal Indian army exercise or Indian armed forces exercise of theaterization and theater threats, etc. This has to be worked out with academia. It has to be worked out with lots of इंटेलिजेंस पीपल जिनको तजुर्बा है इसका, और इस तरीके के लोग इंटरनेशनली ऑल्सो टू डिसर्न दिस इज अ थिंग इन प्रोग्रेस। एट नो पॉइंट जो है आप उंगली लगा कर कह सकते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट में आज ये काबिलियत है और कल ये काबिलियत है। दिस इज समथिंग विच इज वर्क इन प्रोग्रेस, ये चलता रहेगा। और हमें 80% 70% वी शुड एम कि इसके बारे में हमको मालूम है इतना, 100% आपको कभी नहीं मालूम होगा। So I'm sorry, मेरा जवाब जरा थोड़ा वेग सा रहा है, मगर I want to allude to this aspect कि you can't be static in your thinking. हम ये बहुत वक्त से, for far too long have we been talking of 2 front and 2.5 front, etc. We should start, there's a whole change shift taking place. It is coming into the northwest Arabian Sea area, you can northwest Indian Ocean जिसको कहते हैं, this whole area between, let's say, Madagascar के north में, heading right up to the Persian Gulf and coming down towards the Arabian Sea, towards Mumbai and the coast of Gujarat, etc. This is a swath of waters which is going to be very important, and all the peripheral areas around it equally important. And therefore, this exercise cannot be just, as I said, conducted purely as a military exercise. And not only that, sir, what I want to add कि अभी जो मालदीव्स का जो तख्ता पलट गया है, and it's openly now Maldives is with China, and Maldives orientation is more towards Turkey and also a lot towards Pakistan. I see this problem, this 2.5 front shifting from the hill sectors down to the oceans, and I think we need to start thinking of some out of the box situations coming up. For example, they could there is news report. I'm also being a bit vague. There are also news reports that the Houthis are allowing the Chinese to go by. Obviously, there's some kind of a linkage between the Chinese, Houthis, Iranians, and all that. And they're not targeting Chinese flagships or ships carrying Chinese cargo, right? So I think we need to look at this 2.5 front war a little widened and probably even multinationally if needed. And also, this is my view, sir, that so far we have spoken of Quad as some construct which is there for the Western Pacific. I've always been of the opinion that Quad has tremendous value here. अगर आप देखेंगे तो Red Sea में, other side of Red Sea, the US force and the UK forces are acting on this side.
in the, of the Gulf of Aden, it is the Indian Navy which is acting. Already the Quad in some form is active here. So I think our whole situation has to rethink the larger issue and what's being presented on ground. And then we need to approach Pakistan in that manner, Pakistan and China and their collusivity in that manner. There's no doubt. I See, don't know whether Jan Shankar, you are making a lot of sense. Let me tell you this. I'll tell you. We have been talking about this for a long time. The continental versus the maritime. You see this debate which has been in India for very long. Admiral Raja Menon is the man who really initiated this debate many years ago. And his theory was that time that every year the Chinese will do something in the high Himalayas all along the line of actual control. कोई ना कोई चीज कहीं करेंगे जिससे कि हमारी अटेंशन वहां पर जाएगी. हमारी सोच विचार में सिर्फ जो है माउंटेन स्ट्राइक कोर होगी और कन्वेंशनल ऑपरेशंस होंगे. And China will merrily rule the maritime zone completely because they are dependent hugely on the energy routes, sea routes, and the container traffic which goes from here as far as their trade is concerned. That is now translating. That's not translating into something where now you're finding that importance coming up where everyone is looking at this particular zone. कि दुनिया का ट्रैफिक जाता है यहाँ से. The Houthis have actually made us open our eyes to it. ये जो सुएज कैनाल से लेकर और स्ट्रेट्स ऑफ मलाका तक का इलाका है, how crucial it is. Maldives going from us, although I personally feel it is a temporary thing. It's not something. Yeah, that's okay, sir. But it's there. The situation is there. But ये situations बहुत tactical होती हैं. ये कभी होता है, कभी जाता है. And Maldives cannot live without India. I'm very clear on that. Yeah, I agree with you. But it has forced us to think. It has forced us to think. You can't afford to have this area under control and domination of the Chinese, of the PLA Navy. Fortunately, they are not at that level yet, right? And before they come to that levels, we should rise. Your idea of the Quad here. The Quad so far has emphasized looking at only the Pacific, leaving this portion of the Indo-Pacific only to India and the Indian Navy. Actually, we need to look at this more conjointly. So, I mean, again, you might think I'm going on a tangent, but I'll go there because that will highlight the importance of this area. For the past 2 months, I've been tracking the Panama Canal. The Panama Canal is today dry. Maersk has started using a land bridge there. They're using a train to, shift goods from the Atlantic seaboard to the Pacific seaboard. And the Panama Canal is dry because there's a drought there for the past 1 year, and Lake Gatun doesn't have water to fill into the locks. And there's the tonnage which can go through Panama Canal has reduced. As a result, a lot of traffic, right, which was to go through Red Sea, was being diverted to Panama Canal, and it's not going through there also. So there is a huge supply chain disintegration taking place as we speak. It might not be felt, but we're going to see a huge inflation curve coming up in the economy. I'm giving you the larger picture. In that kind of scenario, this Red Sea channel and the Strait of Hormuz and the Gulf of Eden and the piracy and Houthis, backed by this combination of Pakistan, China, Iran, right, and Russia playing their geopolitical game, has issues for which we need to redefine our thinking of this 2.5 war. 2.5 front. The front is here. The second front is here. The one front, the northern front, the second front is here. And 0.5 might be point quarter or whatever it is. But we now have to start thinking very seriously about this. Maybe some other day, sir, we'll talk about this. If you have any questions on this, you have your views. You could put it. Otherwise, I would add one thing, and which we should also consider as one of our subjects of discussion in the future. You see, the complexity of all this gets even heightened when you look at the returning cycle of global terror. You see, when you look at it from the Red Sea up to Afghanistan and within Pakistan, this whole region is active at the moment, and is active with all kinds of fourth generation issues, fourth generation warfare kind of issues.
And this is exactly, if you go back into the history and see how did the Al Qaeda rise, how did ISIS come about from the 80s to the 90s, 2014, you will realize this is exactly how it happened. And Yeah. when they get the space to do it, then some trigger is required. 9/11 gave the biggest trigger to global terror, right? And the end of global terror came with the Battle of Mosul, 2018. 17 years this whole thing lasted. This is another issue which is coming back and unrealizingly, and we need to understand it far better, because along with all the fronts that we are talking about, this is going to be another front which is going to be very, very dangerous. Fine, sir. We'll have another discussion with this. With maybe two, three more people. We'll talk about this. I think we've started with just the chief, but I think what the chief has said has led us to all this. And I think, I'm sure, if what we have spoken today reaches the right people, they'll also start thinking. And I'm glad that you have triggered off something beyond what the chief spoke. Exactly. And to me, Actually, that that's the whole purpose that's of the our whole discussion. idea.